Bismillahirrahmanirrahim. In our last class, we discussed the efficiency of transformer. We discussed that how can we determine the efficiency of transformer by using transformer tests. And then we proved the condition for maximum efficiency of transformer. Today we will talk about the auto transformer. That what is actually an auto transformer, what is the difference between an auto transformer and a two-winding transformer, what are the advantages and disadvantages of auto transformer, and where can we use the auto transformers. So actually an auto transformer has a single winding on an iron core, and a part of winding is common to both the primary and secondary circuits. We know that in a two-winding transformer, we have the primary windings and the secondary windings, and the power is transferred from the primary towards the secondary by means of electromagnetic induction, or we can say that the power is transferred from the primary towards the secondary inductively. It means that in a two-winding transformer there is no electrical connection between the primary and the secondary windings, whereas in an auto transformer has a single winding on an iron core, and a part of winding is common to both the primary and secondary circuits. Like if we look at the figure, this is actually an auto transformer. So an auto transformer has a single winding on an iron core, and a part of the winding is common to both the primary as well as the secondary circuits. अगर हम इसी फिगर को देख लें तो फिगर 1 जो है दिस इज एक्चुअली एन स्टिप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, और फिगर 2 जो है ये हमारे पास स्टिप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है. तो अगर इन फिगर्स को हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वाइंडिंग है, स्टिप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में भी और स्टिप अप ऑटो ट्रांसफार्मर में भी, और इसी एक वाइंडिंग में कुछ पोर्शन प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के साथ कॉमन है. तो इसलिए हम कहते हैं कि एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज अ सिंगल वाइंडिंग ऑन एन आयरन कोर एंड अ पार्ट ऑफ द वाइंडिंग is common to both the primary circuit as well as the secondary circuit. So it means that the power is transferred from the primary towards the secondary by means of conduction as well as induction. Because we have a single winding on an iron core and the primary and secondary are connected conductively as well as magnetically. मतलब there is an electrical connection between the primary and the secondary winding, so the power is transferred from the primary towards the secondary conductively as well as inductively. So यहाँ पे हमारे पास ये स्टिप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये हमारे पास स्टिप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है. So N1 are actually the number of turns of the primary winding, whereas N2 are the number of turns of the secondary winding. So ये जो AB windings है, these are actually the primary windings, whereas CB windings are the secondary windings. AB windings are the primary windings, whereas CB windings are the secondary windings. Figure shows the connections of a loaded step down as well as a step up auto transformer. अगर हम इन फिगर्स को देख लें, so we have a step down auto transformer and we have a step up auto transformer. Actually I1 is the input current, whereas I2 is the output or load current. अगर यहाँ पे हम देख लें तो जो हमारे पास सेकेंडरी करंट है, सेकेंडरी करंट इज नॉट इक्वल टू द आउटपुट और लोड करंट. सो ये हमारे पास एक मेन डिफरेंस है बिटवीन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड एन ऑटो ट्रांसफार्मर. अगर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी करंट होता है वही लोड करंट होता है. इन सिंपल वर्ड्स, द सेकेंडरी करंट इज एक्चुअली द लोड करंट, whereas
in an auto transformer the secondary current is not equal to the load current. जो secondary current होता है वो load current नहीं होता, बल्कि load current will be different than the secondary current. इसी तरह स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, सो ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, तो इसमें दो किस्म की करंट्स फ्लो कर रही हैं. एक हमारे पास ये लोड करंट है I2 और जो कॉमन पोर्शन है उसमें डिफरेंस ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. सो इट मींस दैट द सेकेंडरी करंट विल नॉट बी इक्वल टू द लोड करंट. और ये भी याद रखें कि जो कॉमन पोर्शन होगा बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स, तो उसमें डिफरेंस ऑफ करंट फ्लो करेगा. और इसके जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है डिजाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर पे, टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर पे, कि हमारे पास स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मींस दैट इन अ स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी करंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द इनपुट करंट, और द आउटपुट करंट विल बी ग्रेटर देन द इनपुट करंट. Secondary current in this case is actually I2 minus I1. So the output current is actually greater than the input current. It means that कि जो common portion है उसमें I2 minus I1 current flow करे and the direction will be upward. Because अगर इसी point पे हम nodal analysis apply कर ले, so it means that the input currents will be equal to the output current. So अगर इसी direction को हम downward ले तो यहाँ पे nodal analysis apply नहीं होता. So that is why I told you that the direction of this current actually depends upon the type of transformer. So the output current is greater than the input current, so it means that I2 minus I1 current will flow through the common portion and the direction will be upward. Because अगर इसी point पे हम nodal analysis apply कर ले और अगर डायरेक्शन हम डाउनवर्ड ले तो इसी पॉइंट पे नोडल एनालिसिस सेटिस्फाई होता ही नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्शन अपवर्ड लेंगे. इसी तरह अगर हम स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर को देख लें, इट मींस दैट I1 विल बी ग्रेटर देन I2. सो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी I1 माइनस I2 एंड द डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड. So in each case, I1 is the input current and I2 is the output or load current. Regardless of auto transformer connection, the current in the portion of the winding that is common to both the primary and the secondary is the difference between these currents. The relative direction of the current through the common portion of the winding depends upon the connections of the auto transformer. As I already told you that the direction of the current depends upon the connections of the auto transformer, that we are using स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर. तो अगर हमारे पास स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है, इट मींस दैट द इनपुट करंट विल बी ग्रेटर देन द आउटपुट करंट, सो I1 माइनस I2 करंट विल फ्लो थ्रू द कॉमन पोर्शन. इसी तरह अगर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है, इट मींस दैट कि जो आउटपुट करंट है दैट विल बी ग्रेटर देन द इनपुट करंट. इट मींस दैट I2 माइनस I1 करंट विल फ्लो थ्रू द कॉमन पोर्शन. Now let's talk about the theory of auto transformer. This is actually a step down auto transformer and this is the equivalent circuit of this auto transformer. तो अगर हम इन वाइंडिंग्स की बात कर लें, the primary windings are actually N1 whereas the secondary windings are N2. So primary windings के क्रॉस जो वोल्टेज है that is V1 और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V2. सो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है, सो दिस नंबर ऑफ वाइंडिंग्स विल बी N1 माइनस N2. दिस नंबर ऑफ वाइंडिंग्स विल बी N1 माइनस N2 और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V1 माइनस V2. सो ये नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो है दैट इज N1 माइनस N2 और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V1 माइनस V2. अच्छा, इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह ड्रा करते हैं? लाइक अगर इसी पॉइंट को हम कंसीडर कर लें पॉइंट 2 को, तो अगर पॉइंट 2 को हम इसी तरह कंसीडर कर लें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब दिस इज एक्चुअली N1 माइनस N2, तो ये हमने एक साइड पे ले लिया N1 माइनस N2 जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V1 माइनस V2 और जो N2 वाइंडिंग्स है
जिसके क्रॉस वोल्टेज V2 है वो हमने दूसरी साइड पे ले लिया। मतलब इसी पॉइंट को हमने कॉमन ले लिया और एक साइड पे ये वाइंडिंग्स ले ली और दूसरी साइड पे ये वाइंडिंग्स ले ली। मतलब हमने बिल्कुल इस तरह एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह कनेक्शंस बना लिए। बट रिमेंबर दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दीज वाइंडिंग्स। नाउ अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता, कि जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। लाइक these windings are actually N1 minus N2, जिसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V1 माइनस V2, और ये जो वाइंडिंग्स है ये असल में 0.2 है, और ये जो वाइंडिंग्स है these windings are actually N2 वाइंडिंग्स, जिसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V2। सो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं दैट this voltage divided by this voltage will actually be equal to these number of turns divided by these number of turns. It means that V2 divided by V1 minus V2 will be equal to N2 divided by N1 minus N2। मतलब ये voltage divided by this voltage will be equal to these number of turns divided by these number of turns. V2 divided by V1 minus V2 will be equal to N2 divided by N1 minus N2। तो इससे हम ये लिख सकते हैं that V2 into N1 minus N2 will be equal to N2 into V1 minus V2। So this means that V2 N1 minus V2 N2 will be equal to V1 N2 minus V2 N2। V2 N1 minus V2 N2 will be equal to V1 N2 minus V2 N2। सो एक साइड पे भी V2 N2 है, दूसरी साइड पे भी V2 N2 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो इट मींस दैट V2 N1 will be equal to V1 N2, or in other words we can write V2 by V1 will be equal to N2 by N1। It means that the voltage transformation ratio remains the same in an auto transformer। अगर हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं या ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो सेम रहेगा। Now the current in this portion is actually I1, whereas the current in this portion is I2 minus I1। So the volt ampere ratings on the primaries on this side will actually be equal to the volt ampere ratings on this side। मतलब यहाँ पे जो volt ampere ratings है that will be equal to the volt ampere ratings on this side। It means that I1 into V1 minus V2, I1 into V1 minus V2 will be equal to V2 into I2 minus I1। I1 into V1 minus V2 will be equal to V2 into I2 minus I1। The volt ampere ratings on this side will be equal to the volt ampere ratings on this side। So I1 into V1 minus V2 will be equal to
V2 into I2 minus I1. So it means that V1 I1 minus V2 I1 will be equal to V2 I2 minus V2 I1. So V2 I1 and V2 I1 ये दोनों साइड्स पे हैं, so they will cancel out each other. It means that V1 I1 is equal to V2 I2. It means that the input apparent power will be equal to the output apparent power. This is actually the apparent power, so the input apparent power will be equal to the output apparent power. As we know that the primary and secondary windings of an auto transformer are connected magnetically as well as electrically. So the power is transferred from the primary to the secondary inductively as well as conductively. ये बात ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है. Since the primary and secondary windings of an auto transformer are connected magnetically as well as electrically, it means that जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, तो इट मींस दैट कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट्स हैं वो इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होते हैं और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड होते हैं. सो द पावर फ्रॉम द प्राइमरी इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी inductively transformer action as well as conductively, that is conducted directly from the source to the load. Output apparent power is equal to V2 I2. अब हम ये चेक करेंगे कि कितना पावर इंडक्टिवली ट्रांसफर होगा और कितना पावर कंडक्टिवली ट्रांसफर होगा. How much power will be transferred inductively and how much power will be transferred conductively. So if we look at this figure, the output power will be equal to V2 into, matlab the power that is available at the secondary will be equal to V2 into I2 minus I1. V2 into I2 minus I1, apparent power transferred inductively. It means that we have the primary circuit and we have the secondary circuit. तो कितना पावर इंडक्टिवली ट्रांसफर होगा? That will be equal to V2 I2 into I2 minus I1. Now what does this mean? V2 into I2 minus I1. As we know that I1 by I2 is equal to K. So it means that I1 will be equal to K I2. So V2 into I2 minus I1 is equal to K I2. So it means that V2 into I2 will be equal to 1 minus K. अगर इससे हम I2 कॉमन लें, so V2 into I2 will be equal V2 into I2 into 1 minus K. This amount of power will be transferred inductively, or we can say that V2 I2 is equal to V1 I1. तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं V1 I1 into 1 minus K. What is V1 I1? V1 I1 is actually the input power. V1 I1 is the input power into 1 minus K. So this amount of power, input power into 1 minus K, will be transferred inductively. Now how much power will be transferred conductively? How much power will be transferred conductively? So if this amount of power is transferred inductively, so अगर इसी power को हम input power से minus करेंगे, so the remaining amount of power will be transferred conductively. It means that how much power will be transferred conductively? So input minus input into 1 minus K. तो इससे अगर हम इनपुट को
commonly, so it will be equal to 1 minus 1 minus k. It will be equal to input into 1 minus 1 plus k. So input multiplied by k, where k is the transformation ratio. Input into k. This amount of power will be transferred conductively, whereas input into 1 minus k. This amount of power will be transferred inductively. Like suppose the input power is 1 kilowatt. The input power to a transformer is 1 kilowatt. And the voltage transformation ratio is 1 by 4. The input power of an ideal transformer is 1 किलोवाट or 1000 watt, और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो दैट इज 1 by 4 और 0.25. सो अगर ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स हैं, ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, सो हाउ मच पावर विल बी ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली एंड हाउ मच पावर विल बी ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली. सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं दैट हाउ मच पावर विल बी ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली. सो जो फार्मूला है दैट इज द इनपुट इनटू 1 minus k. सो इनपुट इज 1000 into 1 minus 1 over 4. So that will be equal to 3 by 4 into 1000. That will be equal to 750 watts. Now how much power will be transferred conductively? So that is equal to input multiplied by k. So that is equal to 250 watt. It means that if 1000 watt is the input power to a transformer, to the auto transformer, so 750 watt power will be transferred inductively and 250 watt power will be transferred conductively. So this was all about the output. So apparent power transferred inductively V2 I2 minus I1 तो ये already हमने calculate कर लिया, that is power transferred inductively will be equal to input into 1 minus k. Power transferred conductively will be equal to the input minus power transferred inductively. So that will be equal to k into the input. Now what are the advantages and disadvantages of auto transformer? Remember that an auto transformer requires less copper than a two-winding transformer of similar rating. अगर हम two-winding transformer लें और auto transformer लें similar ratings की, तो auto transformer requires less copper. जब हम primary और secondary windings डिजाइन करते हैं तो उसके लिए less copper required होता है. क्यों? क्योंकि ऑटो, ये याद रखें कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो नियर टू यूनिटी होगा, नियर टू यूनिटी होगा. तो जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो नियर टू यूनिटी होगा तो जो कॉमन पोर्शन है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स उसमें बहुत कम करंट फ्लो करेगा. जब कम करंट फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली जो कॉमन पोर्शन की वाइंडिंग है वो हम बहुत पतली वाइंडिंग लेते हैं. तो इसलिए वी से दैट एन ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स लेस कॉपर देन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ सिमिलर रेटिंग. इसी तरह जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें लॉसेस बहुत ही कम होती है. तो नॉर्मली लॉसेस और एक्साइटिंग करंट को हम नेग्लेक्ट करते हैं. जब लॉसेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो काफी हाई होती है एज कंपेयर टू अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. इसी तरह एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज अ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन देन अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. और अगर हम एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लेते हैं सेम रेटिंग्स की, so an auto transformer will be smaller in size. So these are actually the advantages of an auto transformer. लेकिन ये याद रखें कि ये एडवांटेजेस तभी ज्यादा होंगी कि जब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो दैट इज नियर टू यूनिटी. जब ये नियर टू यूनिटी होगा तभी
एडवांटेजेस ज्यादा होंगी. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर? There is a direct connection between the primary and secondary. Therefore, the output is no longer DC isolated from the input. चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है, so there is no DC isolation. The output is no longer DC isolated from the input. इसी तरह an auto transformer is not safe for stepping down a high voltage to a low voltage. पहले ही मैंने आपको बताया कि ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है वो नियर टू यूनिटी होती है. So, in other words, we can say that an auto transformer is not safe for stepping down a high voltage to a low voltage. It means that, let's suppose we have a step down auto transformer. We have a step down auto transformer of 11 kV to 230 volts. We have a step down auto transformer. लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो नियर टू यूनिटी नहीं है. मतलब V2 डिवाइड बाई V1, so 230 डिवाइड बाई 11,000, that is much less than 1. So I told you that an auto transformer is not safe for stepping down a high voltage to a low voltage. Why? Because अगर यहाँ पे कोई मतलब ये लोड किसी वजह से रिमूव हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई ओपन सर्किट आ जाता है, so जितना जो प्राइमरी वोल्टेज है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी के अक्रॉस आएगा. If an open circuit develops in the common portion of the winding, मतलब जो कॉमन पोर्शन है अगर यहाँ पे ओपन सर्किट डेवलप हो जाए, so the whole primary voltage will appear across the secondary, across the common portion. तो ये ट्रांसफार्मर के लिए भी सही नहीं है, और अगर कोई यहाँ से गुजर रहा हो या इसको कोई टच करे तो पर्सन के लिए भी मतलब सही नहीं है. So this is not safe for the equipment as well as for the persons. So we say that an auto transformer is not safe for stepping down a high voltage to a low voltage. इसी तरह अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर को लें और टू वायरिंग ट्रांसफार्मर को लें, so the short circuit current is much larger than for the two wiring transformer of the same rating. यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट अगर होता है, मतलब let's suppose secondary पे कोई शॉर्ट सर्किट अगर होता है, so it means that a portion of the primary winding will be shorted too. तो जब प्राइमरी वाइंडिंग का भी कुछ पोर्शन शॉर्ट होगा, इट मींस दैट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस करता है. जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा दैट विल बी मच हायर एज कंपेयर टू अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ सिमिलर रेटिंग्स. सो दीज आर एक्चुअली द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर. अब ऑटो ट्रांसफार्मर को हम यूज कहां पे करते हैं? सो याद रखें कि ऑटो ट्रांसफार्मर को हम एज अ बूस्टर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. मतलब नॉर्मली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप्स अकर करती हैं, तो उन वोल्टेज ड्रॉप्स को कंपेंसेट करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं, और इसी टाइप के ऑटो ट्रांसफार्मर्स को हम बूस्टर ट्रांसफार्मर्स कहते हैं. सो ऑटो ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड टू कंपेंसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप्स in transmission and distribution lines. When used for this purpose, they are known as booster transformers. इसी तरह ऑटो ट्रांसफार्मर्स को हम एसी मोटर्स के साथ भी लगाते हैं स्टार्टिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये क्या करता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसको रिड्यूस करता है. सो नॉर्मली ऑटो ट्रांसफार्मर्स को हम एसी मोटर्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं टू रिड्यूस दी सप्लाई वोल्टेज, और ऑटो ट्रांसफार्मर को हम एज अ कंटिन्यूअसली वेरिएबल सप्लाई भी यूज करते हैं. So auto transformers are also used for continuously variable supply. अब एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं?
So let's discuss about the conversion of two winding transformer into auto transformer. Let's suppose we have a two winding transformer. We have a 10 kVA two winding transformer. So we have a 10 kVA 2300 by 230 volts two winding transformer. If we want to convert it into an auto transformer, the two windings of the transformer are connected in series. मतलब ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है. This is 2300 वोल्ट and this is 230 वोल्ट. तो अगर इसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हमने कन्वर्ट करना हो ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो हम क्या करते हैं कि ये जो दो वाइंडिंग्स है इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. फिर पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि इससे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे या स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाएंगे. सो जब हम एडिटिव पोलैरिटी यूज करेंगे सो और ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी अ स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर. अगर हम सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज करेंगे सो और ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी अ स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर. लाइक पहले मैं क्या करता हूं कि एडिटिव पोलैरिटी यूज करता हूं. This is actually the additive polarity. So this will be 2300 volts और जो आउटपुट पे हमारे पास वोल्टेज आएगा that will be 2300 plus 230 volts. So that will be 2530 volts. So यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा that will be I1 minus I2. I1 minus I2 because we have a step up transformer and the direction will be downwards. यहाँ पे जो करंट होगा that will be I1 और यहाँ पे जो करंट होगा that will be I2. So this is actually a step up transformer जब हम additive polarity यूज करेंगे. अगर हम subtractive polarity यूज करेंगे so we will have a step down transformer. This is actually our subtractive polarity. It means that the input will be 2300 volts, the output will be 2070 volts. Because we are using the subtractive polarity. So यहाँ पे जो करंट होगा that will be I2 minus I1 and the direction will be upwards. This is I1 and this is I2. When a two winding transformer is converted into auto transformer, the kVA rating of the resulting auto transformer is greatly increased. The higher rating results from the conduction connection. जब हम एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में तो जो kVA रेटिंग्स होंगी ऑटो ट्रांसफार्मर की वो बहुत इंक्रीज होंगी. kVA रेटिंग्स मतलब इंक्रीज करेंगे. मतलब अगर ये 10 kVA टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो अगर इसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो kVA रेटिंग्स होंगी दैट विल बी मोर देन 10 kVA. kVA रेटिंग्स क्यों इंक्रीज करती हैं? ड्यू टू दी conduction connection. क्योंकि यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर हो रही है that is transferred by means of electromagnetic induction, but there is an electrical connection too in an auto transformer जिसकी वजह से पावर ट्रांसफर करेगा. तो इसलिए जो kVA रेटिंग्स होती है वो इंक्रीज कर जाती है. So this was all about the auto transformer. That what is actually an auto transformer, what is the difference between the auto transformer and a two winding transformer, what are the advantages and disadvantages of an auto transformer, where can we use the auto transformers and how can we convert the two winding transformer into an auto transformer. If there are any questions you can ask. Thank you.